Welcome back, my dear students of class 9th. Let us critically analyze your poem Lake Isle of Innisfree. Let us look at those figures of speech or literary devices used in this very particular poem for your understanding of this poem. So see, first figure of speech used in this poem is repetition. Repetition, you know this. Repetition is a kind of a figure of speech in which certain word is repeated, particularly for emphasizing certain things. So see, the first line of the poem, if you look at the first line of the poem, I'm reading from the text. I will arise and go now and go to Innisfree. So if you look at the first line of the poem, you will find the repetition of the word go. This word go is repeated 2 times to emphasize that now the poet, the speaker of the poem will go and nobody can stop him. So the first figure of speech that is used in the poem is repetition. Now the second, alliteration. Alliteration, you know, I may have told you, alliteration is the repetition of a certain sound just at the beginning of consecutive words, just at the beginning of the words placed one after the other. So just look at this very particular line of the poem. See the third line of the poem. Just see second line first. Second line, we have 2 words. And a small cabin built there of clay and wattles made. So see, second line of the poem has 2 words, and those 2 words have begun with C letter, cabin and clay. Then the third line of the poem has 3 words, and those 3 words have begun with H sound. You see this, C sound and H sound, like the words here, cabin, clay. H sound, hive, honey, bee. Yes, sorry, have, hive, honey, bee. So this is the repetition of C sound and H sound. It means it is alliteration. Now see the personification. See how the morning is just personified just as a woman, because he says, what he says, see in this line, he says, dropping from the veils of the morning. Dropping from the veils of the morning. So dropping from the veils of the morning, in this line, here the poet imagines morning just as a woman, or personifies morning, a non-living object, just as a woman with her face covered. So if a non-living object is treated as living, it is called personification. So here the morning is personified as a woman. So which figure of speech? Personification is used. Now see next, anaphora. If you look at the line number 9, line number 10 and line number 12, you will find that all line number 9, line number 10 and line number 12, all these 3 lines have begun with I. So if a certain line of a poem, or more than one line of a poem, just begins with the certain word or certain phrase, it is called anaphora. So anaphora is also used in this very particular poem. Why? Because the 9th line, 10th line and 12th line of the poem begin with I. And apart from this, my dear learners, one more very important figure of speech is used in this poem, that is onomatopoeia. Onomatopoeia. Let me wipe out, or let me score out. Wipe out or score out the meanings here. So onomatopoeia.
onomatopoeia. Onomatopoeia. Onomatopoeia. When the sound itself makes its meaning clear. Itself makes its meaning clear. It is onomatopoeia. Means in generally onomatopoeia, what happens, my dear learners, the poet makes use of certain words which somehow are associated with certain sounds. Like if I say that the dog was barking, so here the bark word denotes certain kind of a sound. So see, if you find the use of certain words in the poem, they signify a sound, certain kind of sound, there it is onomatopoeia. Yeah, just remember, my dear learner, this is the pronunciation, onomatopoeia. See this line of the poem, very important and famous line of the poem, this: I hear the lake water lapping. This line you see. Example: I hear the lake water lapping. L-A-P-P-I-N-G. Lapping. So lapping is a kind of a sound. This word just signifies a kind of a sound, or this word is used for just a kind of a sound that actually the water produces. So, my dear learners, these were the certain figures of speech used in this poem. But apart from these figures of speech, one figure of speech is also used, that is called imagery. Imagery. I-M-A-G-E-R-Y. Imagery is a kind of figure of speech by which the poet tries to create a picture of words. So my dear learners, if you read this poem very carefully, you will find that W.B. Yeats is trying to create a world, trying to create a world without using figures. For creating the world here, he is what? He is using the words. Like if I say onomatopoeia is used, it means he has made use of which imagery? This is called, you see, visual imagery. Sorry, this is called the just hear imagery. Hear imagery means the sound. The sound just is associated with the hear imagery. If he talks about a cabin of clay he will build, these words somehow help us to just draw a figure or to visualize a figure of a house or of a cottage. So you will find that
lots of just lots of beautiful imageries are used in this very particular poem with the help of the word the poet has used in the poem. So imagery has also been used in this poem. So my dear learners, I hope आपने इन सारी चीजों को ठीक से समझा होगा कि कैसे इस पोम में, पोम की पहली लाइन में जहाँ पे गो को रिपीट किया गया है, रिपीटिशन है, फिर सी साउंड को सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन सी जो है लेटर से 2 वर्ड शुरू हो रहे हैं, कैबिन और क्ले सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में 3 वर्ड्स शुरू हो रहे हैं एच से, हैव है, फिर जो है आपका पोम आप देख सकते हैं पहला हैव है, फिर हाइव है, फिर हनी बी है। तो यहाँ पे हमें सेकेंड लाइन में सी का साउंड रिपीट हो रहा है 2 वर्ड्स में, 2 वर्ड सी से शुरू हो रहे हैं और थर्ड लाइन में 3 वर्ड्स एच से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह से यदि हमें ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनके शुरू में सर्टेन ही लेटर यानी सर्टेन लेटर्स का साउंड आ रहा है बार बार, तो इसे हम कहते हैं एलिटरेशन। तो एलिटरेशन यूज किया गया है पोम में। फिर पोएट ने जो है मॉर्निंग को क्या कह रहा है, वेल्ड ढका हुआ, जिसका चेहरा ढका हुआ हो। तो मॉर्निंग को जो पोएट है वो पर्सोनिफाई कर दे रहा है, एक वुमन जैसा, एक औरत जैसा उसको जो है इमेजिन कर रहा है, उसकी कल्पना कर रहा है एक औरत की जैसी। तो अगर जो हम किसी नॉन लिविंग को, किसी ऐसी वस्तु को जिसमें जान नहीं है, उसको हम लिविंग जैसा सजीव दिखाते हैं, जीवित दिखाते हैं, किसी जीवित व्यक्ति जैसा हम उसके साथ व्यवहार करते हैं या उसको हम दिखाते हैं कि वो जीवित जैसा व्यवहार करती है, तो इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन भी यूज्ड है पोम में। फिर मैंने आपको बताया पोम की 9th लाइन, 10th लाइन और लास्ट लाइन 12th लाइन आय से शुरू हो रही है, तीनों लाइन आय से शुरू हो रही है। तो यदि पोम की कोई लाइन, 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन, खासतौर पर 1 से ज्यादा लाइन, किसी एक वर्ड से या किसी एक फ्रेज से, 1 से ज्यादा वर्ड से शुरू हो रही है, सेम एक ही वर्ड से बार बार शुरू हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम कहते हैं एनाफोरा। तो एनाफोरा भी पोम में यूज हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि चूंकि इसमें इमेजरी मीन्स अ काइंड ऑफ अ पिक्चर दैट इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। और इमेजरी हमारी किससे जुड़ी होती है? इमेजरी हमारे सेंसेस से जुड़ी होती है। तो जहां पे कुछ विजुअल से रिलेटेड, कुछ आई से रिलेटेड इमेजरी हो, तो वहां पे विजुअल इमेजरी होगी। अगर जो हमारे वो कानों से रिलेटेड, किसी साउंड से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया आपको पोम में, हाँ एक मैं भूल गया कि पोम में ओनोमोटोपिया भी यूज हुआ है। ओनोमोटोपिया वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जिनके साउंड अपने आप में अपनी मीनिंग को बताते हैं या वो साउंड से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। तो ओनोमोटोपिया भी हो, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ क्या, इमेजरी पोम में बहुत ज्यादा यूज हुई है, खास तौर पे विजुअल इमेजरी। दूसरी ऐसी इमेजरी, हियर इमेजरी, जो हमारे कानों से संबंधित होती है, क्योंकि साउंड की बात कर रहा है, लैपिंग वाटर। तो माय डियर लर्नर्स, ये कुछ जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं इस पोम में। आई होप दिस explanation of mine or the critical analysis of this poem of mine will help you understand this poem in a much better, just a light, my dear learners. Thank you, my dear learners, for watching this video.